viewers, I'm just telling, தமிழ் அந்த ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல அந்த சீஃப் மினிஸ்டர், அந்த முதல் மந்திரி, அவருக்கு பர்சனல் யூஸுக்காக வைக்கப்பட்ட ஹெலிகாப்டரை எல்லாம் மலை பிரதேசங்கள் அடைய முடியாத பகுதிகள் இருந்தனவோ அங்கெல்லாம் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அந்த ஹெலிகாப்டர் கொடுத்திருக்காரு. அதாவது என்ன ஒரு சரியான திசையில பயணிச்சிருக்காரு பாருங்க. எல்லாரும் 100% அவங்களுக்கு இது வேக்சினேஷன் வரணுங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு முன்னெடுப்பு தான் வந்து பாராட்டத்தக்கது. இத நினைச்சே பார்க்க முடியாது யார் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்கன்றது. இது நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு பெரிய பாடமா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். And social media is playing a very crucial part in a negative sense also, in a positive sense also. And when these opposition parties, especially this left wing ecosystem, they have propagated about that this vaccine is not good and this will create some deficiencies whoever vaccinate his or herself. So that's right. And after the stage they were the first person to take vaccination. Yeah. Opposition on national level, our prime minister also put forward an example by vaccinating himself. On on public health centers, and same approach and same techniques adopted by our own state. Our chief minister also led from the front to put forward examples in front of the people so that they can get vaccinated. And also the people who are representative in our legislative assembly, the bureaucrats, they have encouraged people to get vaccinated. Is going on social media and what fake propaganda they are propagating, but the efforts, the joint efforts by panchayat representative, by health workers and by ASHA workers, there are special posts created in village level which is known as ASHA. Yes. Workers. They are a type of health workers who are making people aware about the vaccination and the importance of vaccination. And on some areas, Himachal government also faced some propaganda propagated by different political parties that if you will get vaccinated then you will feel deficiencies in your life. So on that occasion government ने स्पेशल एफर्ट करे. गवर्नमेंट ने उनकी जो बेनिफिट्स वो गवर्नमेंट से लेते थे, जैसे उनका राशन था, पेंशन्स थी, उनका थ्रेट दिया कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो वी विल not allow you to get benefit from all these schemes. So इस तरीके के जो efforts हैं वो गवर्नमेंट ने करे. So after that Himachal become able to get vaccinated. Okay. नमस्ते जितेंद्र केशव जी. I am हेमा. मेरी नाम हेमा मालिनी है. एंगे भारतम यानी एक चैनल है तमिल में, उसके माध्यम से ये इंटरव्यू आप अभी लेने वाली हूँ. ये बहुत बड़ी संतोषजनक एवं मानवतापूर्वक बात है कि हिमाचल प्रदेश ने 100% टीकाकरण कंप्लीशन किया है. इसके बारे में आपके क्या बोलना है? धन्यवाद मैम मुझे जोड़ने के लिए आपके चैनल पे. हिमाचल प्रदेश, अगर आप इफ यू सी द ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स वन. And if we judge it through its sources and the availability of resources, then it is they are very limited one. But after all those difficulties and after all these complexities, still Himachal is doing very good in the field of vaccination. And on 4th of September, Himachal has completed 100% of vaccination for the first dose of vaccination for the eligible people of the state. And the Prime Minister of the country also praised the efforts put forward by the state government, by health workers and the other institutions who have actively participated in this mass scale of vaccination. आपकी अगर टोपोग्राफी देखें तो आपके टोपोग्राफी में 90% पॉपुलेशन इज सिचुएटेड इन रूरल एरियाज, दैट टू हिली रीजन्स. ओके, ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग की बात है. इसकी सामना कैसा किया आप लोगों ने? बहुत बड़ी चैलेंजिंग.
जी, बेसिकली अगर आप हिमाचल को देखेंगे तो जो ज्योग्राफी है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर मतलब 6 मंथ जो है वो पूरा का पूरा ढका रहता है। जैसे आपका लाहौल स्पीति है, फिर एक चंबा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, उसके कुछ फार फ्लंग एरियाज हैं, बरमौर है, आपका पांगी है। तो दे रिमेन अंडर दी अंडर स्नो क्लैड snow clad for more than 6 months, and connectivity, the availability of resources not that much good, but still by putting extra efforts in those areas. For example, एक हमारा यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर एक बड़ा बंगाल करके एक लोकेशन है, एक विलेज है जहाँ पर वैक्सीनेशन पहुंचाना काफी टफ था। तो उसके लिए जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने अपना खुद का जो उनका हेलीकॉप्टर है, हेल्थ वर्कर्स को ले जाने के लिए और उनको वैक्सीनेट करने के लिए, यही बात है खुद का क्यों रिसोर्स था वो जन के लिए, जनहित के लिए उन्होंने प्रयोग किया। फॉर द बेनिफिट ऑफ तमिल व्यूअर्स, आई एम जस्ट टेलिंग, தமிழ் அந்த ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல அந்த சீஃப் மினிஸ்டர், அந்த முதல் மந்திரி, அவருக்கு பர்சனல் யூஸுக்காக வைக்கப்பட்ட ஹெலிகாப்டரை எல்லாம் மலை பிரதேசங்கள் அடைய முடியாத பகுதிகள் இருந்தனவோ அங்கெல்லாம் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அந்த ஹெலிகாப்டர் கொடுத்திருக்காரு. அதாவது என்ன ஒரு சரியான திசையில பயணிச்சிருக்காரு பாருங்க. எல்லாரும் 100% அவங்களுக்கு இது வேக்சினேஷன் வரணுங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு முன்னெடுப்பு தான் வந்து பாராட்டத்தக்கது. இத நினைச்சே பார்க்க முடியாது யார் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்கன்றது. இது நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு பெரிய பாடமா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். अभी जरा जितेंद्र केशव जी, जयराम ठाकुर जी की इनिशिएटिव जो हमने पढ़े थे, ये ऐसा लग रहा है कि he has walked many miles extra, because I was going through what are all the steps he had taken. If you see your topography and other things, agriculture, horticulture, hydropower, tourism, these 4 are important areas in your Himachal Pradesh. Okay, and in all these places people will be scattered everywhere. Yes. Okay, scattered everywhere. And more than anything else, your income, main source of income for the state is from tourism. Yes. So if the people are vaccinated, then people have comfort zone to visit HP, Himachal Pradesh. Yeah. That was the call taken by your chief minister. Our chief minister. Yes. Yes. And एक और बात है, आपकी state was the second one to implement the open defecation free state. Am I right? Yes ma'am. This भी हमने पढ़े हैं, open defecation free state. Why I am saying this is not relevant here, but I am just trying to tell the extra miles what the chief minister had walked through. Yes ma'am. Actually, these are अभी ये these are the basic steps that state government is putting forward for the people, so that they can become aware about the aware about the sanitization. Basically coronavirus, and the basic concept behind controlling coronavirus is to sanitize yourself, sanitize your surroundings, and control all those activities which cause mass spread of this COVID-19. So this, by controlling often defecation, and by controlling social gatherings, and by controlling interaction with the people on mass level. So these are some basic efforts that our state is putting forward to control COVID-19. एंड एक और बात है, पैन इंडिया लेवल में आप देखिए तो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रही थी। जी मैम, ये मोदी का है, इसमें क्या क्या है हमें पता नहीं, इसे ये टीकाकरण करने के बाद क्या क्या होने वाला है, ऐसा सब चल रहा था। बट यू पीपल हैव सक्सेसफुली fought against that and done that. So you have done widespread publicity also, positive publicity also. May I know about that? In the hilly areas and rural areas you have done. Basically, ma'am, we are living in a world where everything is available on social media, and social media is playing a very crucial part in a negative sense also, in a positive sense also. And when these opposition parties, especially this left-wing ecosystem, they have propagated about that this vaccine is not good and this will create some deficiencies whoever vaccinate his or herself.
So that's right. And after the stage, they were the first person to take vaccination. Yeah. Actually, opposition. On national level, our Prime Minister also put forward an example by vaccinating himself. On yes on public health centers, and same approach and same techniques adopted by our own state. Our Chief Minister also led from the front to put forward examples in front of the people so that they can get vaccinated. And also the people who are representative in our legislative assembly, the bureaucrats, they have encouraged people to get vaccinated. So it is a joint effort put forward by our state officials, state bureaucracy, and state political representatives, so that we become able to achieve this milestone. Yes, and your population is 75 lakh around as on date. But though it looks very small in numbers when compared to other states, but you are spread in such a vast hilly terrains and valleys. So this is beyond possible challenge for Himachal Pradesh to get this done. And kudos to entire state and your Chief Minister and the team. And one more thing I would like to add, corruption-free statistics make Himachal Pradesh is least corrupt. That is also एक बहुत बड़ी संतोषजनक बात है. Very warm information, nice information on that. And more than anything else, the mental mindset of the entire state was positively boosted by your state government in different fora. That's what I have learned about in the last 3 days. I started reading what were the hurdles and how you came over it. And what is your take for other states now having completed 100% vaccination in your state? Basically, ma'am, अगर आप हिमाचल का देखेंगे तो हिमाचली people are very pure-hearted. They are very devoted towards their fundamental duties. They respect the law of the nature, law of the land, and all those things. They are very much important for them. And people are very much matured about all these pandemics. They know that how by equally participating with the government, equally participating with the administrator, they can control these things. And अगर आप दूसरा देखेंगे, जैसे हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पर कि वहां पर लोगों का बेसिक जो रहन सहन है वो दे आर वेरी सिंपल वन. जैसे जो गांव के लोग हैं, they have nothing to do with what is going on social media and what fake propaganda they are propagating. But the joint efforts by panchayat representative, by health workers, and by ASHA workers, there are special posts created in village level, which is known as ASHA. Yes. Workers. They are a type of health workers who are making people aware about the vaccination and the importance of vaccination. And on some areas, Himachal government also faced some propaganda propagated by different political parties that if you will get vaccinated, then you will feel deficiencies in your life. So on that occasion, government ने special effort करे. Government ने उनकी जो benefits वो government से लेते थे, जैसे उनका राशन था, pensions थी, उनका threat दिया कि अगर आप vaccinated नहीं होंगे तो we will not allow you to get benefit from all these schemes. So इस तरीके के जो efforts हैं वो government ने करे. So after that, Himachal become able to get vaccinated. जितेंद्र केशव, बहुत बड़ी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. और अभी ये बात बोलने के लिए अभी हमारे व्यूअर्स के लिए ये बात बोलना चाह रही हूँ. हिमाचल प्रदेश நம் தேசத்திலேயே முதலாக 100% வேக்சினேஷன், அதாவது தடுப்பூசிகள் செலுத்திக் கொள்வதில் முதன்மையான இடத்தில் இருக்கிறது. ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தை பொறுத்தவரை அது மலைப்பாங்கான பூமி. 75 முதல் 80 லட்சம் வரையே உள்ள மக்கள் தொகை உள்ள பூமியாக இருந்தாலும் பரந்து விரிந்த மலைகளும் பள்ளத்தாக்குகளும் பெரிய பெரிய சேலஞ்சை கொடுத்தது அந்த ஹிமாச்சல் பிரதேஷுக்கு. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த முதல் மந்திரியும் அங்க இருக்கிற சமூக நல பணியாளர்கள் அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பும் மக்களுடைய உண்மையான அதாவது திறந்த மனப்பான்மையும் தான் இதை அடைய, இந்த இலக்கை அடைய
ரொம்ப பெரிய வழிகாட்டியா இருந்ததுன்னு சொல்லி ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தை சேர்ந்த திரு ஜிதேந்தர் கேஷவ் நம்முடன் இணைந்திருந்தார். அவருக்கு நன்றி கூறுவோம். நாமும் ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தை பின்பற்றி 100% இலக்கை அடைவோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். வந்தே மாதரம், ஜெய்ஹிந்த், பாரத அன்னையின் புகழ் ஓங்குக.